आज जो मेरे साथ हैं कैप्टन एसके सांगवान जी, जो हमारे एक कारगिल के वॉर वेटरन हैं और उस वॉर में इन्होंने अपने एक अटैक के दौरान अपनी एक लेग को खो दिया था और उसके बाद में उन्होंने उस चैलेंजेस को भुगतते हुए भी किस तरीके से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया और एक आइकॉन बने स्पोर्ट्स में, एथलेटिक्स में। ये सब चीजें आज हम उनसे सुनेंगे। The 16 Grenadiers. Sangwan's patrol was there in the area of Yaldor. Yaldor is a nala which is going up right up to the LC. He had gone in, and while returning, he had gone in onto area known as the Spring, and while returning from there, he was ambushed. And also of great presence of mind. He extricated most of his personnel from there, and we managed to establish contact with him about 3 to 4 hours after his ambush, and within the next 24 hours we did manage to recover most of his casualties. Sangwan was to remain there for 3 weeks. From there he would be sent to occupy the ridgeline of the Three Pimple area, where he was to witness one of the fiercest battles of the 50-day war. It was here when Sangwan was moving with his men to occupy a post vacated by the enemy that he had his leg blown up in a mine blast. I was told by my senior officers that you may find some resistance also there. Though we have already cleared that area and further operations are to be launched from my position the next day. Pakistani, before retrieving, they had thrown these plastic minefields, and I stepped onto the mine, and with a big explosion I lost my leg. Regrets. In fact, the day when we are putting on a uniform, that day we already promised our complete body, everything to the nation, for the nation. In fact, I am not happy because only a small part of my body has gone, but still my complete body is left. So those idiot Pakistanis, they just taken it small. Good evening, ladies and gentlemen, viewers. I am once again with another warrior and my show that Win Life Like a Warrior. On this show, I bring the people who have really done something out of the box and gone through the challenges of life, and finally they have win their life like a warrior. Now here the warrior doesn't mean that every time one has to go to the battlefield and fight with the bullets and the weapon. Here what I mean to say is that, ladies and gentlemen, that warrior is the one who can fight the demons within himself. And the demons are basically that your limiting beliefs, self-limiting beliefs, self-sabotaging traits, or your limiting thoughts, your negative thoughts, your fear of failures, fear of judgment, fear of लोग क्या कहेंगे. आधे से ज्यादा जिंदगी हम इन्हीं बातों के लेके जूझते रहते हैं और अपनी जिंदगी में कुछ अचीव नहीं कर पाते. तो उसी कड़ी में जो हमारे आज के वॉरियर हैं वो सब आपको बताएंगे कि किस तरीके से जिंदगी को जीना चाहिए, कितनी भी परेशानियां आए. तो यहाँ मैंने जो वॉरियर का एक फ्रेमवर्क जो कॉइन किया है, द वर्ड वॉरियर इज ए 7-letter वर्ड, जिसमें W का मतलब है विन लाइफ लाइक ए वॉरियर, मीन्स विनिंग माइंडसेट. W मीन्स विनिंग माइंडसेट. हर स्थिति में योर माइंड शुड बी विनिंग. Next letter A is that you should have an attitude of gratitude. And the third letter R is that you must remove clutter from your life. That clutter could be of your physical clutter, mental clutter, psychological clutter, or even the digital clutter. आज के ज़माने में digital clutter ज़्यादा खतरनाक है. Then उसके बाद में next R is you reinvent yourself. जब आपने 3 चीजें पाली, winning mindset, attitude of gratitude, remove the clutter, then you become reinvented yourself. The next letter is I, which is you become a person who can inspire others. So be a personal who become an inspiration to others.
and the final letter O is that you must overcome procrastination from your life, because if you can overcome that procrastination, then you can achieve whatever you want in life. देखो जिंदगी में या तो आप excuse दे सकते हो या result मिल सकता है. So procrastination is giving the excuses. And finally, once you have achieved it, all 6 stages of warrior, that is WARRIOR, then you can reap the rewards of life. तो उसी सीरीज में आज जो मेरे साथ हैं कैप्टन SK सांगवान जी, जो हमारे एक कारगिल के वॉर वेटरन हैं, और उस वॉर में इन्होंने अपने एक अटैक के दौरान अपनी एक लेग को खो दिया था, और उसके बाद में उन्होंने उस चैलेंजेस को भुगतते हुए भी किस तरीके से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया और एक आइकॉन बने स्पोर्ट्स में, एथलेटिक्स में. ये सब चीजें आज हम उनसे सुनेंगे. तो इससे पहले कि मैं और कुछ डिटेल में जाऊं कैप्टन सांगवान की जिंदगी के, हम उन्हीं से मिलते हैं, उन्हीं से मुताबिक होते हैं और उनको वेलकम करते हैं. कैप्टन सांगवान, वेलकम टू द शो विन लाइफ लाइक ए वॉरियर. Sir, thank you so much. It has really been an honor, and in fact, the moment you had we got connected, I was looking forward to in fact meet you, interact with you, and what a noble thought, what a nice cause. And you yourself are a veteran, so you have lived this life, and now coming back and giving people like us an opportunity, and through our experiences sharing your life experiences with the society. So this is a wonderful cause, and I thank you so much for inviting me for the talk today. Thank you so much, Captain Sangwan. It's my pleasure too that having such a warrior on my show, because the show का नाम ही Win Life Like a Warrior है. And आपने जो किया है कि आप पहले से ही एक कमांडो रहे हैं, आपने एशियन गेम्स और नेशनल गेम्स में चैंपियनशिप जीती हुई हैं, और आपने क्या क्या नहीं किया. सो यू आर एप्ट पर्सन फॉर माय शो विन लाइफ लाइक ए वॉरियर, एंड यू आर विनिंग कंटिन्यूअसली द लाइफ. सो टू स्टार्ट विद सांगवान, नॉर्मल क्वेश्चन किसी के दिमाग में जहन में ये आएगा कि कैप्टन सांगवान ने जो अभी हाइट्स अचीव किए, आखिर वो किस बैकग्राउंड से आते हैं, किस परिस्थितियों से वो निकल के आए हैं. तो लोग सुनना चाहेंगे. तो आप थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आपकी बचपन कैसा था, आपकी स्कूलिंग क्या थी. जी, थैंक यू सो मच सर. मैं बहुत ही प्राउड फील करता हूं जब अपने बारे में, अपने बचपन और अपने परिवार के बारे में दुनिया के साथ शेयर करता हूं. तो आई बिलोंग टू हरियाणा, डिस्ट्रिक्ट भिवानी. नाउ इट्स इन चरखी दादरी विलेज पेंतावास. एंड माय फादर, ही वाज इन इंडियन एयरफोर्स इन द एजुकेशन ब्रांच. और जब पिताजी एयरफोर्स में थे तो हमारी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय में हुई, और केंद्रीय विद्यालय में होने की वजह से हमें जहां भी पिताजी के ट्रांसफर हुआ तो उनके साथ अलग अलग जगह जाने का हमें अवसर प्राप्त हुआ. सो दैट वाज, वो हमारा एक अच्छा ग्रूमिंग कि मीटिंग मोर नंबर ऑफ पीपल, नए नए दोस्त बनाना, नई जगह पे जाना, नई अपॉर्चुनिटीज को अवेल करना, ये एक बचपन से रहा था. और हम बचपन से अपनी जड़ों से जुड़े थे. छुट्टियों में गांव आते थे, घर आते थे, और जितना हम अपने जहां वर्क प्लेस में, जहां स्कूल में, वहां एंजॉय करते थे, उतना ही ज्यादा एंजॉय हम गांव में आके हमारे जो ऊंट से हल चलाते थे वो हमें अभी तक याद है. तो आई यूज्ड टू एंजॉय माय लाइफ चाइल्डहुड वेरी मच. देन केम सम चैलेंजेस. हम 3 भाई बहन हैं कि पिताजी का जल्दी उम्र में देहांत हो गया एयरफोर्स में, व्हेन ही वाज पोस्टेड इन पुणे. तो माताजी की एजुकेटेड नहीं थी, मतलब लिटरेट नहीं थी, बट शी वाज द वाइसेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड. तो उन्होंने हम सब भाई बहनों को अपने दम पे पढ़ाया लिखाया, एंड मैं सबसे छोटा भाई हूँ. तो इस तरह से हमारा ग्रोथ हुआ, और जो कुछ भी अचीव कर पाया तो हमारे माता पिता के, हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से, और अच्छे गुरु जो समय समय में मिले, अच्छा गाइडेंस करने वाले, हमको देने वाले मिले, उनकी वजह से कुछ भी मैं अचीव कर पाया हूँ. तो इस तरह से आज मैं आपके सामने हूँ. बहुत अच्छी बात कही आपने कैप्टन सांगवान, दैट कि मदर
इलिटरेट थी, बट वो एजुकेटेड थी। एजुकेटेड होने के लिए आपको क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, आपको डिग्रियों की जरूरत नहीं है। एजुकेशन जो आती है वो आपके एक्सपीरियंस से आती है, और लाइफ का जो एक्सपीरियंस होता है वो, हमारी कितनी माताएं और ग्रैंड मदर और मदर्स हैं जो इलिटरेट हैं, उन्होंने कोई कॉलेज नहीं गई, लेकिन उनकी जो वैल्यू सिस्टम है और उनकी जो एजुकेशन जो उन्होंने अपने जीवन में ली है, चाहे उन्होंने अपने देख के दूसरों को लिए, उससे ही अपने बच्चों को कितना अच्छे वैल्यू सिस्टम दिए हैं, उससे बड़ी अचीवमेंट क्या हो सकती है। आज के जमाने में कितनी भी आप क्वालिफिकेशन ले लो, लेकिन वैल्यू नहीं आएंगी और आप वो एजुकेटेड नहीं होंगे तो कोई फायदा नहीं है उसका, डिग्रीज का। सो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि she was one of the most educated lady in the world, and definitely she was when she made her children उस लायक बनाया कि आज वो अचीवर्स हैं। सो कैप्टन सांगवान की इसके बाद में आपने अपना एजुकेशन पूरा किया, देन आप फिर आई बिलीव पहले आप एयरफोर्स में गए जी, और वहां जाके आपने अपना करियर की शुरुआत की, और शुरुआत ऐसे की कि आप उसमें रहते हुए, पहले तो उसमें जाना भी इतना इजी नहीं होता था, क्योंकि वो भी एक मेरिट बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस होता था, रिटन एग्जाम होता था मुझे जहां तक याद है, और उसके बाद में बाकायदा प्रॉपर सिलेक्शन होता था, हर आदमी नहीं हो पाता था, ब्रिलियंट बच्चे ही जाते थे। और उसके बाद में फिर आपने विद इन उसमें रह के जॉब और आगे की पढ़ाई में एक सामंजस्य रखा, एंड देन आप आगे बढ़े, वो थोड़ा सा बताइए। जी, ये इनफैक्ट जो एक स्ट्रगल का या एक कुछ पाने का एक चाह जो मन में थी, वो एक्चुअली उस तरह से थोड़ा मैं हमेशा से थोड़ा सा एक्स्ट्रा करने की कोशिश करता था, और उस समय पारिवारिक के जो फाइनेंशियल कंडीशंस को देखते हुए और अपना एक सेल्फ डिसीजन, अपने आप पैरों पे खड़े होने का जो फैसला था, टफ एग्जामिनेशन था, एयरफोर्स में जब ज्वाइन किया। और उस समय मेरे बड़े ब्रदर हैं वो MBBS कर रहे थे, माताजी की सिर्फ पेंशन की ही हमारी वो इनकम हो पाती थी। तो ऐसे में मैं 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स को छोड़ के मुझे एयरफोर्स ज्वाइन करने का अवसर प्राप्त हुआ, और वहाँ पर भी जाके मैं जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, और फिर 12th क्लास मैंने बायोलॉजी से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से मैं 12th क्लास पास किया। एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड आई स्टिल फील सो हैप्पी कि जब मुझे मेरे ट्रेनिंग पीरियड में जो हमें कुछ सैलरी मिलती थी, तो उसमें उस सैलरी में से मैं अपने बड़े भाई जो कुछ MBBS कर रहे थे, कुछ उनको भी कंट्रीब्यूट कर पाया, कुछ माँ को भी कुछ दे पाया। तो ये एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन और एक जिम्मेदारी का एहसास बचपन से रहा, और ये वही मैं जो माता पिता ने जो गुण दिए थे उनसे। और एयरफोर्स ज्वाइन करने के बाद हमेशा मुझे ये ध्यान था कि मेरी मंजिल बहुत ऊंची है, ये सिर्फ रास्ता है, और रास्ता तय करने के लिए मुझे जितने भी चैलेंजेस आएंगे उसको मैं खुशी खुशी एक्सेप्ट करूंगा। तो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जब हमने ग्रेजुएशन कर ली, तो उस समय पढ़ाई का बड़ा बहुत जोर था, अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिला। तो मैं MBA पुणे यूनिवर्सिटी से रेगुलर कर रहा था, साथ में बैंकिंग PO एग्जाम दिया, वो भी मेरा बैंकिंग PO एग्जाम भी क्लियर हो गया, और जॉब में भी थे। और मैं जॉब में भी था, रेगुलर जॉब में, एयरफोर्स की जॉब में था। शिफ्ट ड्यूटीज, तो मैं नाइट ड्यूटीज प्रेफर करता था ताकि मैं दिन में कॉलेज में अटेंड कर सकूं। एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि हमारा कॉलेज वाज अराउंड 20 किलोमीटर्स फ्रॉम माय एयरफोर्स स्टेशन पुणे लोहेगांव। तो वहां से सुबह मैं 20 किलोमीटर साइकिलिंग करके जाता था कॉलेज में क्लास अटेंड करके आई हैज टू कम बैक। तो टाइमिंग सेट था हमारा कि 1 घंटा 20 किलोमीटर, तो 1 घंटे में जाना, 1 घंटे में आना। और वो भी इसलिए क्योंकि यदि हम बस से ट्रेवल करते थे तो बस में लगता था लगभग 1.5 पौने 2 घंटा, और क्योंकि बस अलग अलग रूट से जाती थी, और साइकिल से हम लगता था 1 घंटा। तो फिजिकल फिटनेस भी मेंटेन होती थी, अपना टाइमिंग भी अच्छा होता था, और एक सेंस ऑफ ड्यूटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती थी कि मुझे एक बैलेंस बनाना है। और एक और सर आपके साथ शेयर करूंगा कि एक एडिशनल जिम्मेदारी लगती थी कि कहीं कोई मेरे डिपार्टमेंट में मेरे इसके ऊपर कोई उंगली ना उठाए कि ये वहां पढ़ाई करता है और काम में कमी रह गई है। तो रात भर जाग के, जो आपको पता है, आपने एयर ट्रैफिक कंट्रोल लोहेगा जहाँ इतने बड़े वो हैं,
तो वहाँ ट्रैफिक कंट्रोल वाले उस बिल्डिंग, जो आइकॉनिक बिल्डिंग होती है, वहाँ हमने ड्यूटी की हुई है। नाइट ड्यूटीज, गार्ड ड्यूटीज, सेंट्री ड्यूटी, हर जिम्मेदारी पूरी अच्छे से निभा के, एंड आई वाज अबाउट टू कंप्लीट माय एमबीए एग्जाम। फाइनल्स करने से पहले ही फिर सीडीएस का एग्जाम दिया, और सीडीएस में फर्स्ट अटेम्प्ट में आई गॉट थ्रू सीडीएस ऑल्सो। आई ऑलमोस्ट लेफ्ट माई, जैसे 12th छोड़ के मैं एयरफोर्स ज्वाइन किया, एयरफोर्स ज्वाइन करके फिर मैंने 12th पास किया। लाइकवाइज आर्मी ज्वाइन करने से पहले आई लेफ्ट माई एमबीए एग्जाम्स फाइनल्स, which I completed after getting commissioned. I did my MBA after that. And तो मगर कुछ भी है, जो एक लक्ष्य ले रखा है, रास्ते में रुकावट जरूर आ जाए, लेकिन पहुंचना जरूर है, अचीव उसे जरूर करना है। तो एक आपने पूछा कि किस तरह की जर्नी रही बिफोर द आर्मी, तो इस तरह के जूझते हुए, हंसते खेलते हुए, चैलेंजेस के साथ में आगे बढ़ते रहे सर। वंडरफुल। इनफैक्ट ये बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन होना चाहिए सांगवान, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि यार मैं अभी तो मैंने जॉब कर लिया, अब मैं आगे कैसे बढ़ूं, अब कैसे बढ़ सकता हूं, मैं तो बहुत बिजी रहता हूं। और कौन समझ सकता है मुझसे ज्यादा इस बात को कि डिफेंस में जब आप एक बार एनरोल हो जाते हैं तो वहां जिम्मेदारी कितनी इंपॉर्टेंट है, और आप एक मिनट भी इधर से उधर नहीं हो सकते, और वो भी एटीसी वाले रोल में जहां एयर ट्रैफिक कंट्रोल है। मैं समझ सकता हूँ सांगवान कि आपने कितनी मेहनत की होगी। और मैं यहाँ एक चीज बताना चाहता हूँ, जिंदगी में हाउ यू डू एनीथिंग, हाउ यू डू एवरीथिंग। जो आप एक काम जैसे करते हो वैसे ही आप सारे करते हो। तो जिस तरीके से आपने एक जिम्मेवारी निभाई अपने जॉब की, उसी तरीके से आपने जिम्मेवारी निभाई आपको आगे बढ़ने की। या आप ये कहो कि आगे बढ़ने में आप जितने कमिटेड थे अपने इम्प्रूवमेंट के लिए और आगे इवॉल्व होने के लिए, उतने ही आप कमिटेड अपने जॉब के लिए भी। सो इसीलिए जो आदमी का कैरेक्टर होता है वो यहाँ भी उतना ही अच्छा होता है जहाँ दूसरी जगह अच्छा होगा। एंड दैट इज व्हाट यू हैव प्रूव्ड इट। वंडरफुल, वंडरफुल। ठीक, उसके बाद में जब आप कमीशन हो गए और आप आई बिलीव 16 ग्रेनेडियर में आपका कमीशन हुआ जी, और आई थिंक आपने 96 में कमीशन किया और 99 में कारगिल हो गया। जी, तब बताइए कि आप जैसे ही वहाँ ये सिचुएशन आई, उसके बाद क्या हुआ, मतलब हाउ डिड यू एक्सपीरियंस दैट मोमेंट that within 3 years you must be the young captain that time, and you landed up in the Kargil stateway. ये आज एज अ हैंड इन द हाइंडसाइट मैं कह सकता हूँ कि ये खुद बहुत खुशकिस्मत लोगों को ऐसे मौका मिलता है। पहली बात तो ये है कि जब हम यूनिफॉर्म पहनते हैं, जिस दिन हम पास आउट होते हैं, कमीशन होते हैं और शपथ उठाते हैं, तो हर एक फौजी जो कोशिश करता है कि उसे ऐसे अवसर प्राप्त हों कि जो उसकी ट्रेनिंग है, जो उसने सीखा है, वो कहीं ना कहीं उसे ऐसे मौका मिले कि वो देश की सेवा कर सके या डायरेक्ट अपने रोल में जो ट्रेनिंग है उसके अंदर अपना सके। तो जब ये 99 में ऐसा मौका मिला, तो ये बात जग जाहिर है कि वी वर एक्चुअली नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर अ काइंड वॉर लाइक सिचुएशन। और ऐसी ही सिचुएशन थी जब पहली बार जैसा कॉल आया एंड दैट एंटायर यूनिट हैड टू मूव, जो कंपनीज को मूव किया गया था बटालिक सेक्टर में, जहां खबरें आई थी कि कुछ गडरिया ने देखा था कि कुछ एक ऐसे मूवमेंट हो रहे हैं, बाहर से कुछ लोग आए हैं और उसको देखा, वो यहाँ के नहीं हैं, बाहर के लोग हैं। तो उनको ये असरटेन करने के लिए हमारी पेट्रोल्स को भेजा गया कि जो इन बकर वालों ने बताया है, इन गुजरों ने बताया है, जाके उसको कंफर्म करो, वेरीफाई करो कि सच में कोई ऊपर पहाड़ों में मूवमेंट है कि नहीं है। बिकॉज जब से शिमला समझौता हुआ था तो विंटर्स में हमारी भी अपनी कुछ वो टफ जो पोजीशंस थी हम वेकेट करते थे, लाइकवाइज पाकिस्तान भी करता था। एंड इन दैट एरिया बटालिक सेक्टर में हमने वहाँ पहले काम किया हुआ था, तो वी वर अवेयर ऑफ द एंटायर टेरेन। वहाँ के जितने भी नालों में से जितना जो पुल बना रखे थे, लकड़ी के पुल बना रखे थे, पत्थरों से जो बना रखे थे, वो सब मैंने अपने हाथों से बनाया हुआ था। तो उस एरिया का पूरा चप्पा चप्पा मुझे खबर थी। इसीलिए शायद सीनियर कमांडर्स ने वो जिम्मेदारी दी कि आप उस तरफ जहाँ जाएंगे
और बटालिक सेक्टर में। और जब ये ऐसा वाकया हुआ, जब हम वहाँ पहुँचे, तो इट वाज अ टोटल, वी वर टोटली सरप्राइज्ड। जो एकदम से जब एम्बुश हुआ, हम लगभग 100 मीटर उस एरिया में थे जहाँ पर पाकिस्तान के जो कमांडोज ने हमारे पे हमला किया। हमारी साथी मेरे यंग ऑफिसर साथ में थे और कुछ और जवान थे। तो जिस तरह से 3-4 तरह से जब एम्बुश हुआ, लगभग 120 के आसपास पाकिस्तानी थे, और जो एक फौजी समझ सकता है कि साउंड ऑफ द फायर से समझ सकते हैं कि किस टाइप का वेपन है। Correct, तो correct. वो बहुत मतलब MMGs, रॉकेट लॉन्चर्स, एवरीथिंग दे वर फायरिंग अपॉन। तो एक पल के लिए तो मन में घबराहट हुई कि अचानक से, बिकॉज इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड, और वो वादियों में जब ये फायरिंग शुरू होती है तो एकदम पूरा गूंज उठा। तो इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड कि ऐसा क्या हो गया। कुछ समय के बाद जब सिचुएशन एसेस की गई, और इनफैक्ट क्या है, सांगवान के बटालिक का एरिया तो सारे पत्थर हैं और 90 डिग्री के पत्थर हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मैं एक्चुअली कारगिल खुम्बातांग में रह चुका हूँ, और मैं ये अच्छा। टिप नीमू में था, तो ये मेरी ब्रिगेड होती थी वहाँ, 196 ब्रिगेड। ओके ओके सर। तो वो उस एरिया में अचानक से इतने मतलब इतना हैवी फायर, तो पहली बार इतना हैवी फायर देखते मन में घबराहट हुई। और थोड़ी देर में जब हमारे जवान जो थोड़ा तितर बितर हो रहे थे, जब सिचुएशन समझ में आई कि हमें घेर रखा है, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड और जो हमारी ट्रेनिंग, जो कमांडो ट्रेनिंग थी, टू असेस द डेंजर एंड सीइंग द सिचुएशन, इमीडिएटली जो हमारे पास में जो थोड़े बहुत हथियार थे, LMG और रॉकेट लॉन्चर्स वगैरह, पहाड़ों में एज यू नो कि जो हाइट पे बैठा है वो राजा है, जो नीचे नाले में चल रहा है वो उसके ऊपर तो कुछ पत्थर मार के भी गिरा सकते हैं। तो इमीडिएटली वी कैप्चर्ड द हाइट, सिचुएशन जो असेस किया, तो रेडियो सेट हमारे पास में था। वी कम्युनिकेटेड बैक कि वी हैव बीन एम्बुश्ड, और 3 तरह से पाकिस्तानी, या पाकिस्तान, उस समय तो वर्ड पाकिस्तानी मुंह से निकला भी नहीं, बिकॉज वी वर नॉट अवेयर कि बहुत हैवी फायरिंग हो रही है और हमारे पेट्रोल के ऊपर फायर आया है। वी गॉट ऑर्डर्स कि वेरेवर यू आर, 1 इंच भी पीछे नहीं आना है, ऑक्यूपाई द पोजिशन एंड कीप मॉनिटरिंग द सिचुएशन। तो दैट वाज द फर्स्ट रिएक्शन कि हमने किस तरह से रिएक्ट किया उस पे। या इनफैक्ट कैप्टन सांगवान, जो आपने एक बात बोली कि ऐसा मौका बड़े ही आपको भाग्यों से मिलता है कि आपको ऑपरेशन में जाने का मौका मिले और आपको वहां जाने की डिटेल मिले। मुझे याद है कि उस टाइम में जब ये शुरू हुआ था कारगिल, तो हमारी यूनिट लीमाकोंग में थी, ओके, इम्फाल के पास। जी मैं गया हूँ। हाँ, तो मैं उस टाइम में OC1 था वहाँ जी। और मेरा 2 साल का टेन्योर पूरा हो गया, तो मैं स्टाफ कॉलेज से वहाँ गया था। अच्छा सर। और मेरे उसी साल जो है 2 साल पूरे हुए थे। तो जब ये यूनिट को मूव करने का मौका मिला, पूरी 8 डिब को मूव करने का मौका मेरठ के लिए मिला था जी। 8 डिब जो है मेरठ में जाके रहेगी। तो मुझसे पूछा गया था, इनफैक्ट सीओ ने पूछा कि भाई आपका पोस्टिंग आ चुका है, लेकिन उस टाइम क्या होता, लगभग सभी की पोस्टिंग डिफर कर दी गई थी, सारे एंटायर डिप सेक्टर में। तो मेरे से जब सीओ ने पूछा था कि आपकी भी डिफर हो गई, मैंने कहा सर ऐसा है, दिस इज माय यूनिट, आई वांट टू रिमेन विद द यूनिट, दिस इज द टाइम, सो व्हाट इफ आई हैव कंप्लीटेड माय 2 years ऑफ टेन्योर, बट इफ यूनिट वांट मी, आई वांटेड टू बी विद द यूनिट। No, I can't take a decision. I will go to the GOC and I will ask him. अच्छा। हाँ, because probably he could have not taken because मेरा तब तक posting आ चुकी थी। अच्छा। He said I have to go and ask the GOC, and he went to GOC, and GOC asked his, sir, this is the case. His posting has already come, and he wanted to remain with the unit. He said no, he has completed his tenure. He had done his duty. Let him go. I think उस पूरे डिप सेक्टर में, probably being in the DIP headquarter, I was the only one who is posting metallized. Okay. That declaration of that war also, and I was posted in Army headquarter, MI13, so I came. But then unit से लगाव ये था कि जब unit उसी टाइम में वो शिफ्ट हो रही थी, जब मेरठ आ गई, तो I went there and saw them कि भाई कहाँ है, कैसे है, again वो टेंटेज वगैरह में,
But of course, I think that unit didn't move during the Kargil, but they did. Back end में उन्होंने काफी काम किया, but I don't think they went there up in the Kargil. But वो खत्म होते ही, मतलब जैसे ही वो खत्म हुआ था, then I was posted in the Nimu. Okay. And where one of my brigade was in Kargil, another was in Byama. Okay. That was on 192 brigade, and one was in Dras. Okay. Then I saw the entire. तब भी वो जो rockets ऊपर से उड़ते थे, हम दिखाई देते थे, हम नीचे सोते थे, ऊपर से आवाजें आती थी, मतलब तब तक कूल डाउन पूरा नहीं हुआ था. Okay. आरटी के वो देखते हैं. जी. So आपका ये स्टेटमेंट बहुत सही है कि जिसके भाग्य में लिखा है उसी को ये देखने को मिलता है. So I think during that ambush part, I believe the critical situation came when your three boys lost their lives. They became a victim of their fire by the adversaries. And I think that was the challenge for you, how to recover their bodies and send them back. Correct. How did it happen? I think you may like to share with our viewers. Yes, sir. Just to share with everyone, कि पहाड़ों में जितना और स्पेशली हाई एल्टीट्यूड में जितना कठिन आपको ऊपर चढ़ना, पहाड़ों में चढ़ना और ऑपरेशन करना, अपने साथ में जो अपने कैरी बैग्स वगैरह आप लेके चलते हैं और अपने हथियार लेके चलते हैं, उससे बहुत ज्यादा कठिन है एक कैजुअलिटी को इवैक्यूएट करना. तो एक हाई एल्टीट्यूड में एक कैजुअलिटी को लेने के लिए आपको कम से कम 6 से 7 आदमी की जरूरत पड़ती है. और जिस जगह ये एम्बुश हुआ था, ये लगभग रोड हेड से 10 से 12 किलोमीटर ऊपर थी. तो जब ये एम्बुश हुआ तो लगभग रात के 1-1:30 बजे थे. तो एम्बुश शाम को 6-7 बजे हुआ था और हमें पता था कि कुछ हमारे घायल सैनिक साथ में हैं, जो हमारे एक ऑफिसर थे वो घायल हुए. और तो वहां तक पहुंचना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि जब उन्होंने एम्बुश किया तो नाले के पत्थरों के साथ में या झाड़ियों के साथ में वो गिरे हुए थे और ये भी कंफर्म नहीं था कि खत्म हो गए हैं. ये उस समय तक जब एम्बुश हुआ तो पता नहीं था कि शायद बुलेट्स लगी हैं, इंजर्ड हैं या स्प्लिंटर लगे हुए हैं. तो उस चीज को असर्टेन करने के लिए आई हैड टू गो अलोंग विद माय 2 बडीज. एक ऑपरेटर को साथ में लिया. हम 3 लोग इंतजार कर रहे थे कि अच्छा अंधेरा हो जाए. और उस समय उस दिन की बात है, उस रात को लगभग मून टाइमिंग, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग होती है कि मून लाइट होने के बाद तो सब उजाला हो जाएगा. तो मून वाज सपोज टू बी अप इन द स्काई बाय अराउंड 4 in the morning. तो जो कुछ भी हमको सर्च और रेस्क्यू करना था या रिट्रीव करना, वो सब रात को ही करना था. एंड दैट टू अंडर द हेवी एनिमी प्रेजेंस ओवर अस. 3 तरफ से हमको घेर रखा था एंड वी वर डाउन बिलो. सो आई स्टिल रिमेंबर कि आई क्रॉल्ड फॉर अराउंड 150 meters अलॉन्ग विद द नाला और झाड़ियों के अंदर, अपनी गन लेके, एमुनिशन लेके, और वो भी बिना आवाज किए, फुल्ली अवेयर दैट एनिमी इज सिटिंग विद नाइट विजन गॉगल्स, बाइनोकुलर्स सब ले बैठे हुए, और एक भी हरकत होती दे आर गोइंग टू फिनिश अस ऑल. और डेफिनेटली फायर चल ही रहा था. तो वहां जब कुछ हरकत या कुछ वहां कुछ झाड़ी के पीछे कुछ नजर आया, तो दैट वाज ए काइंड मोमेंट कि एकदम से आई गॉट स्केयर्ड. तो दैट वाज अ 1-on-1, आमने सामने हम हैं. एंड हो सकता है कि वो मेरा जवान हो और हो सकता है कि अपोनेंट भी हो सकता है. सो फॉर ए फ्यू सेकेंड्स I just I actually freezed. And then अंदर से आवाज आई कि जो भी है मेरा है. Whatever it is going to happen, I'm going to face it. And it was just 5 around 5 कदम और आगे था. वो झाड़ी के उस तरफ, मैं इस तरफ. तो मैं गया तो he was unfortunately he was one of my best firer, हवलदार पदम. So he had got multiple bullet injury and in a spinal cord also. लेकिन जब तक मैं उसके पास पहुंचा, हल्के धीरे धीरे आवाज लगाई उसको कि पदम. तो meanwhile that till that time like he was no more. So that was the first casualty of Operation Vijay Kargil. And I could not find my other 2 members.
तो नाउ अब जब मुझे पता लग गया है कि वहां एक बॉडी है, मेरा जवान है, मेरा बडी है साथ में, तो इट वाज इम्पोर्टेंट टू टेक हिम आउट। अब उन झाड़ी में से, पत्थरों में से उसको निकाल कर वापस लाना रात के समय, और वो भी क्रॉल करते हुए कैजुअलिटी को लेकर आना, दैट वाज अ ग्रेटेस्ट चैलेंज, ग्रेटेस्ट चैलेंज मेरे पूरी लड़ाई में। कि अब मैं किस तरह से उसको खींच के, बिकॉज उठ तो सकते ही नहीं है, उठते ही पाकिस्तान वाले सब चारों तरफ से मार देंगे। तो मुझे अभी भी याद है कि मैं उस मेरे जवान के साथ में, बॉडी के साथ में खुद रेंगता हुआ, क्रॉल करता हुआ, उसको साथ में क्रॉल करते हुए पीछे लेकर आए, और देन वी इंश्योर्ड कि उस फर्स्ट बॉडी ऑफ द वॉर इज बीन टेकन बैक। टॉकिंग अबाउट द अदर 2 बॉडीज, वो हमें 2 दिन के बाद में, जब हम और ऊपर ऑक्यूपाई कर गए, और जब पाकिस्तान में हमारे तरफ बहुत बुरी तरह से फायरिंग शुरू कर दी थी, और इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू सर्वाइव, देन केम the reinforcements. One of the very brave boy, Manoj Pandey, Gurkha Regiment, Lalit Rai, Colonel Lalit Rai. I was so happy to see the Gurkhas coming for reinforcements, because meanwhile, क्योंकि हमारी बटालियन द्रास में पोस्टेड थी उस समय, and we were supposed to go back to द्रास, और हमारे पास सर उस इतने दिन तक वहां पर ना कुछ खाने के लिए था, ना कुछ पीने के लिए था। We did not have anything to eat because we were not prepared for this thing. तो और बिल्कुल हवा में ऊपर पथरीले रास्ते, और पथरीली जगह है, बर्फ है, -20-30 डिग्री का टेम्परेचर है, एंड वी आर सिटिंग एज ओपन डक्स। तो वहां जब वो गुरखास का पता लगा कि आए हैं, वो आई जस्ट मेट हिम फॉर फ्यू मिनट्स। तो सेड कि सर, मैं मनोज पांडे, एंड आई हैव बीन ऑर्डर्ड टू ऐसे रिलीव यू, और आपको नीचे करना है, और आप चिंता मत करो, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। उसकी आंख में चमक थी। आई सेड, मनोज, मुझे तुमसे सिर्फ एक ही हेल्प चाहिए। बोला, सर बोलो, क्या कर सकता हूँ आपके लिए? मैं कहा, मेरे लिए नहीं, मेरी पलटन के लिए, अपनी आर्मी के लिए। मेरे 2 जवान की बॉडीज वो मेरे वहां रखी है। आई हैव रिट्रीव्ड देम बॉडीज, बट आई डोंट हैव रिसोर्सेज टू सेंड देम बैक। जस्ट एक चीज इंश्योर करो, जस्ट प्रॉमिस मी दैट बॉडीज ऑफ माय मेन, दे रीच बैक देयर होम, उनके परिवार तक पहुंचाना, और ये सबसे बड़ा तुम मुझे गिफ्ट दे सकते हो, बिकॉज दीज आर माय मेन। तो ही, सर, मनोज, he didn't say anything. उसने बस मुझे गले लगाया। He said, सर, ये मेरा है। such a boy. I know. And मतलब मुझे ऐसा लगा कि मेरा छोटा भाई है वहां पर आया, and he will do whatever he will. I know. जो हम कहते हैं कि अपनी वो मेरा भाई है, तो we actually in arms, we just always, we've been trained so कि वहां कोई तेरा मेरा कुछ नहीं है. Yes. And he kept his word, sir. On your channel, I'm sharing with you, to all the viewers, that brave boy, he kept his word. He made sure that the bodies of my men, they reached home. Those are the first 3 casualties of Operation Vijay Kargil of 16 Grenadiers. So I'm so fortunate to get opportunity to fight with such brave soldiers. Later on, he attained martyrdom and he got Paramveer Chakra. So wherever he is, I always keep him in my prayers. I know. In fact, it's a. I am shivering. रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब इन लोगों की बातें सुनते हैं, कभी भी तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं. And what you have brought out means it is a first-hand account. You see, टीवी पे बहुत सुना है, लोगों की कहानियां सुनी है, ये सब किया, लेकिन आज आपसे फर्स्ट-हैंड अकाउंट सुन के आई एम गेटिंग द गूज बम्प्स. एंड नॉट ओनली दैट, ये प्रूव करता है कि जो हमारी ट्रेनिंग है एकेडमी की, कि कम व्हाट मे द नेशन कम फर्स्ट, and then it is the welfare of our jawan which comes first, and then somewhere it comes self. So the first nation, then the jawans, and then the self, and that is what you proved it. Captain Manoj Pandey, our martyred PVC, has proved it, and hats off to that
boy, gentleman, who is no more, but he must be watching such with grace and such pride that he has done something to the nation. Wonderful. In fact, Captain Sangwan, I'm really inspired and emotional after listening this. This is a first-hand account. Yes, sir. In fact, you must have been the part of such an elite group of people like Manoj Pandey, Major Acharya, Captain Saurabh Kalia, Lieutenant Vijay Thapur, because you have seen the entire war and this elite crowd, you must have been a part of that. So Sure. I can have that feeling, what kind of feeling you must be having. Would you like to share something of anyone of that incident other than this? So it was like the Tololing पे जब attack हुआ, तो we were in the Dras sector, Tololing और Tiger Hill के बीच में जो एक और जो hills थे, वो we were on that hill. और जब Tololing capture करने के बाद में then Vikram Batra, the 13th Jackrif, Yes, yes. under his leadership, he was commanding the company. और जब वो 5140 पे जब अटैक किया, because the ground is like Tiger Hill, then comes the Sando Post, then in between Black Rock and this area, Tololing, then 5140, then Bimbat LC. So that is a kind of then Bimbat LC was Kaksar, जहाँ पर 4 Jat regiment थी, then comes Kargil and then Batalik side उस सब जाते हैं. Yes, yes. तो जब बिम्बट जहाँ पर हमारा वॉर मेमोरियल बना हुआ है, वहीं से रास्ता बिम्बट एलसी की तरफ ऊपर जाता था. तो दैट वाज द प्लेस वेयर 5140 पे जब कैप्टन विक्रम बत्रा एंड 13 राजरीफ जैकरीफ का जब अटैक हुआ, तो जब ये यहाँ से अटैक चल रहा था, सो I was in such a advantage at a vantage point that I could see the things from my binoculars actually, कि कहाँ क्या movement हो रही है. और I could not see my Jackrif people, but जब जैकरीफ का अटैक हो रहा है, जब पाकिस्तानी वहां से पीछे से निकल के भाग रहे थे, तो that was the I was at a vantage point, and वहां पर मशीन गन्स हमने जब मीडियम मशीन गन्स लगा रखे थे, they were in our range. Okay. तो वहां से वो निकल रहे थे कीड़े मकोड़ों की तरह, and we were shooting them off. Yeah. And जब and we were all on the same radio set, नेटवर्क पे थे. तो शेर शाह एंड ऑल जो मूवी बनी है शेर शाह की, जैकरेफ एंड 2 राजरेफ, 18 ग्रेनेडियर्स, 16 ग्रेनेडियर्स, 8 सिख, 4 जाट, ऑल ऑफ अस आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, वहीं पर अलग अलग हिलॉक्स पे हैं. एंड अर्ली मॉर्निंग जब तिरंगा झंडा वहां फहराया विक्रम बत्रा एंड टीम ने, एंड द कॉल साइन दिल मांगे मोर, that was the one of my most memorable moments in this thing. And also some of the sad things also on the radio set when we are losing our soldiers. Yes. I have been witness to plenty of such things. When jab hamare air force, when they came for attack, they did a wonderful job, and especially the helicopters when they came in for attack. So when they come for the attack, they actually dive down, fire, and then they move up. So helicopters, they done a wonderful job. But lekin, if you remember, in fact, everyone must be knowing that one of our helicopters was shot down by the Pakistani Stinger missile. Yes. So they our helicopters, they came from Dras श्रीनगर की तरफ से आके वैली में से आए, द्रास से बिम्बट से घूम के 5140, they crossed over 5140 and they were coming towards our side and towards the Tiger Hill side. उस तरफ उनको जो जहाँ राजरीफ को जहाँ अटैक करना था, जैकरीफ को अटैक करना था, उस जगह उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए our attack helicopters had already flown in. So when they were diving down for the attack, उस समय 90 degree opposite side से Stinger missiles were fired by Pakistan. Okay. And I was in just a V shape में साथ में था. यहाँ से ये मेरे choppers आ रहे हैं और यहाँ से ये fire कर रहे हैं. Okay. So, and I was sitting here in front of my eyes. Okay. And
बाकी लड़ाई में कभी कभार अपने छोटी एक नोटबुक, पॉकेट नोटबुक में हम नोट भी करते रहते हैं कुछ भी आए तो। आई स्टिल रिमेम्बर व्हेन द स्टिंगर मिसाइल वाज फायर्ड, somehow I could sense कि कहीं ऐसा ना हो कि इस पे हमारे चॉपर के ऊपर अटैक आ जाए। Okay. एंड जो मुझे डर था वो एक्चुअली वैसा ही हुआ। Oh. एंड आंखों के सामने सर वो स्टिंगर मिसाइल हिट दैट आवर चॉपर MI-17 and fully loaded, but before they could fire their guns or unload their ammunition, the missile hit at the back part, पीछे को उसको hit किया। Okay. And I somehow, I don't know, by instinct or something, I started counting 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. आंखों के सामने that helicopter, entire helicopter, जलता हुआ helicopter नीचे गिरा, and there was a big blast, big boom. You must have lost the pilots. We lost the pilot, we lost the aviators in that. Four of them, they were there, sir. All four of them instantly खत्म हो गए। तो जिंदगी एक ऐसे क्षण में, Yes, that's the life. Now still I feel कि मैं कैसे गिन सकता हूँ कि 10 seconds in front of my eyes. So I've been witness to these kind of scenes also. Their bodies were recovered then? Bodies में सर एक्चुअली सिर्फ कुछ kg मास ही मिल पाया। देन सर्च रेस्क्यू हुआ, बॉडीज हमारे 16 ग्रेनेडियर्स के हमारे जेसी और रेस्क्यू टीम गई थी वहां पर। एंड द बॉडीज एक्चुअली यू नो इतना एमुनिशन, एक्चुअली उसमें एमुनिशन पूरा था, तो इसलिए वो ब्लास्ट बड़ा हुआ। दे कुड नॉट अनलोड द और फायर देयर वेपन्स एंड ऑल दोस थिंग्स। So, but whatever the remains were there, they were retrieved by our battalion and was sent back. So wreckage fallen in the Indian territory only? Yes, wreckage was in Indian territory only. So this was it. And also when the Indian Air Force, they came for firing our Mirages when they came for attack. So we were fortunate to give the coordinates and the locations where they are firing. So पहले फाइटर प्लेन्स आएंगे, they'll come and क्योंकि पूरे बर्फ थी वहां पर, they'll fire the markers, the pink line, पूरे बर्फ में पिंक को स्पॉट्स पड़ जाएंगे। and since we were in one of such locations where we could see them, so from our grid reference we'll tell, okay, this is the place where you have actually hit, but the enemy bunkers are on right or left or something like that. So they take the reference. आज मैं 20-22 साल बाद ये सोचता हूँ तो I'm really not able to understand कि मैं एक जगह पहाड़ी बैठा हूँ, मैं उन्हें बता रहा हूँ इस जगह पे आपने मारा है, और वो एक्चुअली वहां बैठे हैं। इट हैज बीन पास्ड बाय द RTOPs टू द एयरफोर्स बेस पायलट को बता रहे हैं, पायलट किस तरह से उसको एडजस्टमेंट करके अगली बार आके धुआंधार फायरिंग कर रहे हैं। आई एम येट टू डिसाइफर दीज थिंग्स, बट that is the training, Captain Sangwan. That is the training, whether it is for a foot soldier or whether it is a pilot or whether it's anyone. This is what the part of the training, and we are trained for that. but they actually fired the hell out of them when actually they came for the attacks. And they gave a good air support, and they because of that the entire, and it was a unison, whether army, navy or air force, all put together, put band baja diya tha Pakistani ka. They have to make a hasty retreat. Sir, ji sir. So Captain Sangwan, after that, one of the operation when you went again and you have to capture that, I think that, what is that triple thing? Three Pimple Black Rock area, in that area. Three Pimple Black Rock area, and that is where it was again a fierce fighting, and I think it was a sort of a dog fight, and finally we could capture that place, and we were the winner. And during that period, you had that lost your limb. So let's know to the viewer that what was that situation and how did you manage to successfully do your mission or complete your mission? Sir, in fact, this has been, that mission was life-changing event, moment for me. That we were tasked along with the 2 Rajputan Rifles, all the brave soldiers of Rajputan Rifles under the leadership of Colonel Ravindranath.
So he was a CO, and all the brave officers and Jawans of 2 Rajrif. So we got opportunity as a platoon, as with my commando platoon, to go along with the attack with the 2 Rajputana rifles. So this was a strong hold after capturing Tololing. उसके बाद में ये 5140 and 3 Pimple Black Rock area बहुत strong hold था. तो Rajrif and Grenadiers, they were Rajrif was given the main task of the attack, wherein we had different company commanders like Mohit Saxena and Major Acharya, Lieutenant Kengruze, Captain Vijayan Thapar. So we were all part of the same operations. So now, so as part of the strategy, so we were tasked to go for a dummy attack from the left-hand side. And there was a cliff between the target and the last point where we could reach from a left-hand side. And on the right flank was the Rajputan rifles. They were supposed to move up. So when the HR started, when our attack started, so we were under the support of the artillery fire and Bofors and all the medium guns and light guns. So they were firing on top of us, giving us support, and we were crawling, firing, and moving ahead towards the Pakistani posts. So showing and exposing ourselves that yes, today the attack is going to come from this side only. So all their attention and all the bombardment and all the weapons were turned towards our side so that they can eliminate us. And we kept on crawling and kept on moving us. That was moment when we actually understood the meaning of yes, and also कि कुछ mm का फर्क क्या होता है when the live bullets are flying right and left of you, and then you're crawling and moving ahead. जिस पत्थर के बंकर के सारे आप तो अपना सहारा ले रहे हो, पीछे रॉकेट आरपीजी आके वहीं ब्लास्ट कर रहा है, पत्थर के टुकड़े हो जा रहे हैं, आपके हेलमेट पे लग रहा है. So under that live fire situation, we kept on moving ahead, and we were all on the same radio set. So that okay, at a given point of time, we were just about 100 meters from the Pakistani posts. That was a time when, as part of our operation, we were supposed to just go for silence, sudden stop. Meanwhile, while we were keeping the enemies engaged, our Rajputan Rifles companies, they were inching up towards to the enemy post from the right flank, and they had their different fire bases all set, all ready, just to wait for our mission to get over. So by time when we reached our position at the right time, we stopped, we gave the signal, yes, we are in position, and then the Rajputan Rifles attack actually started. So that got the enemy baffled. What has happened? They could not actually appreciate this thing. Actually, हो कुछ और रहा है. And जब वो लड़ाई शुरू हुई, उसके अंदर that was a very, very fierce fight, wherein our brave officers, like we lost Major Acharya, Lieutenant Kengruze, Captain Vijayan Thapar, or around 10 or 12 men. We are, in fact, जब कोई वहाँ चढ़ने को रास्ता ही नहीं था, sir. You know the terrain. तो boys, they climbed like barefoot, और रस्सियों के सारे चढ़ रहे हैं, and 85-90 degree steep climb करके, and the Pakistanis, like, they are just throwing the stones also. संगड़ गिरा दिए उन्होंने, उससे भी हमारे चोट लगी, मतलब हमारे बंदों को काफी इंजरी हो गई. But in that, we were able to capture the Pakistani posts. Of course, we had to pay a heavy price. And but that was a time when we realized, okay, now we require reinforcements. We immediately need to occupy these places, occupy these positions. Otherwise, Pakistanis, they are known for their speed counterattack. So I got orders to immediately move to these positions, and jitna jaldi ho sake kare. And so during those days, we didn't have anything to eat. और पानी भी हमको नहीं, पानी तो बहुत दूर की बात है. जो बर्फ थी, स्टोव के ऊपर एक वो केरोसिन का टिन होता है, टिन के ऊपर थोड़ी बर्फ ली और वो पिघला के उसको, और वही हमारा पानी बन जाता था. और उसमें प्यास लगती थी तो केरोसिन का हल्का हल्का लेयर उसके ऊपर तैरता था.
तो नाक बंद किया और वो पी लिया एंड देन कीप मूविंग. तो दैट वाज द वे वी एक्चुअली यूज्ड टू सर्वाइव. कि यदि कुछ एक्स्ट्रा अगर हमें कुछ मिलता है तो वी प्रेफर टू कैरी एक्स्ट्रा ग्रेनेड्स या एक्स्ट्रा बुलेट्स देन एक्स्ट्रा राशन. तो then I was tasked along with my commando platoon to immediately go and occupy these positions and acquire the entire place, so that till the other reinforcements they come and support us. तो इससे पहले कि सुबह हो और वो आके हम दोबारा हमला कर दें, then you're supposed to be there. तो जब मैं उन पत्थरों के जहाँ हमारा बेस था, बेस से जब चढ़ने के लगा, तो there was a sleeping bag there and मैं रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ा बेस पे. तो कल रविंद्रनाथ was there. तो I said कि जैन सर, सांगवान, मतलब सांगवान बच्चे ध्यान रखना. I said कि सर बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, I'll take care. तो सडनली मैं पूछा कि सर ये, said Major Acharya. His Major Acharya's body was just in front of me. I just saluted him and sir, don't worry, I'll take care. And that was time I moved up कि ध्यान रखना. And so this body was short of the objective. Yes, till the time the body had like हमारे body retrieve कर ली थी हमने. Okay. तो राजेश ने बॉडी रिट्रीव करके थोड़ा नीचे लेकर आ गए थे वहाँ. Okay. तो सीओ जस्ट ना, इनफैक्ट उनकी बॉडी पहुंची थी और जस्ट मैं ऊपर पहुंच रहा था. तो क्योंकि आई वाज ऑन अ डिफरेंट प्लेस, तो वहां से नीचे उतर के हाइट चढ़ के फिर बाय टाइम आई कुड रीच देयर, तो ये वहां पहुंचे. देन रात को लगभग 10-11 बज गए थे. तो वहां पूरे पहाड़ों में उसमें पत्थरों में अंधेरे में जस्ट क्लाइंबिंग अप. एंड मेरे जो जवान थे, जैसे 15 जवान मेरे साथ में थे, तो एक लंबी कतार लगभग आधा 1 किलोमीटर पीछे सब हो गए थे. एंड सब के सब थके हुए, टायर्ड थे, बट वी वर रनिंग अगेंस्ट द टाइम. सो आई जस्ट आई लेफ्ट माई पैक्स डाउन. तो मेरे रेडियो ऑपरेटर बडी को साथ में बता दिया कि ओके, व्हेन ऑल द बॉयज दे गेट टुगेदर, लेट मी नो. टिल द टाइम आई एम जस्ट गोइंग अप एंड जस्ट फाइंडिंग द लोकेशन, कहाँ पर हमें गन्स लगानी है, किस तरह. आई वाज जस्ट अराउंड 150 मीटर्स अप ऑन द टॉप. और वहाँ जैसे पहुंचा तो plenty of many Pakistani dead bodies were lying around. उनके sleeping bags, उनके rations, हथियार सब ऐसे फैले पड़े थे. So then I got a call from on the radio कि हम सब इकट्ठे हो गए and yes, बताइए कि from like किस तरफ से हम ऊपर आए. I said कि since I have seen the place, since the area and route, I'll just come down and get you all up. तो और दूसरा, क्योंकि I had kept left my packs down, so वहां पर तो हर कोई अपना अपना सामान खुद उठाता है. तो I cannot expect my buddy or somebody else to lift my packs. Yes. So I said कि don't worry, I'm just coming down and get you all up. तो मैं 10-12 मीटर ही जस्ट नीचे की तरफ बढ़ा ही था, तो suddenly there was a huge blast. तो बहुत बड़ा धमाका हुआ and I could not understand what happened. लेकिन कुछ सेकंड के बाद में मुझे पैर में दर्द शुरू हुआ और ना धमाका हुआ, मैं गिर गया नीचे. तो मुझे पता नहीं चला कि हुआ क्या. कुछ सेकंड के बाद में जब भयंकर सा मुझे दर्द से महसूस हुआ, और जब मैंने थोड़ा अपने आप को एसेस किया बॉडी को और घुटने के नीचे हाथ लगा के देखा, तो मांस था, कुछ हड्डी लटक रही थी, घुटने के नीचे पैर था ही नहीं. तो इट वाज गॉट ब्लोन ऑफ. देन आई अंडरस्टूड कि आई स्टेप्ड ऑन ए माइन फील्ड. पाकिस्तान ने सब जगह माइंस लगा रखी हैं एंड माइन फील्ड में आने के बाद मैं गिर गया हूँ. और जब आसपास देखा तो देखने में आया कि चारों तरफ आई एम इनसाइड ए माइन फील्ड राइट नाउ. अगर एंड आई एम लकी कि अगर मेरा हाथ कहीं लगता तो हाथ उड़ता, सर लगता तो सर उड़ जाता. एंड तब तक मून लाइट, रात के 11-11:30 बज चुके थे, मून लाइट आ गई थी. एंड असेसमेंट करने के बाद भयंकर दर्द, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, काइंड ऑफ अनबियरेबल टाइप. और मैं बहुत जोर से चीख रहा था. तो जोर से चीखा तो ऐसे में जब चारों तरफ हमारे भी फायरिंग चल रही है, आर्टिलरी की फायरिंग, बोफोर्स फायर कर रहे हैं, एनिमी फायर कर रहे हैं, और मैं वहां चीख रहा हूं. तो जो मेरे जवान जो मेरे पास आने वाले थे ऊपर, दे थॉट कि शायद उनको भी कैप्चर कर लिया है, पाकिस्तान ने कैप्चर कर लिया है, एंड दे आर टॉर्चरिंग हिम एंड दे आर मेकिंग हिम शाउट. तो जिस जगह में गिरा हुआ था
उन्होंने वहां मशीन गन लगाया और मेरी तरफ फायर करना स्टार्ट कर। इट वाज टोटल क्योस, मतलब एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। War is a chaos. वॉर इज अ क्योस। एंड एक्चुअली वहां तो जैसे दिवाली पे चारों तरफ पटाखे छूट रहे हैं, बम गिर रहे हैं, कौन मार रहा है किसको मार रहा है पता नहीं चल रहा है, अंधेरे में सब लड़ाई हो रही है। देन जब थोड़ा बहुत बीच में गैप आया है, शाउटेड आई सेड कि भाई मैं हूं, मेरी तरफ फायर मत करो। देन दे रियलाइज्ड कि ओके सिचुएशन इज समथिंग एल्स। देन आई टोल्ड देम कि मेरा माइंड में पैर आ गया है, ऐसा हो गया है, और यू हैव टू कम अप एंड हेल्प मी आउट। और इस चीज का ध्यान रखो, बिकॉज आई वाज लूजिंग लॉट ऑफ ब्लड। तो बाय द टाइम दीस पीपल दे केम अप, तो मैं अपना फर्स्ट फील्ड ड्रेसिंग साथ में रखा हुआ था, तो जितना मांस हड्डी जो कुछ भी था उसको लपेट के टाइट करके एकदम बहुत तगड़ी सी अपने अपने आप ही सारे उसके घुटने के नीचे जितना मांस पे सबको उठा के पूरा बांध लिया टाइट, सो दैट आई डोंट लूज ब्लड एंड आई शुड नॉट लूज कॉन्शियसनेस। I ordered them not to keep their foot down on the ground. They should keep their foot on the boulders. पत्थरों पे पैर रखो, because it's a minefield. And sir, you know, आप फौजी हैं कि जब किसी को पता चल जाए कि minefield है सामने, I know, बहुत मुश्किल है। तो ये हर कदम पे मौत है। Yes. तो getting those boys up in the minefield during the war, Yeah. it is मतलब कि क्या मैं कहूँ कि क्या उनका जज्बा रहा है, क्या उनकी Yes. हिम्मत आई उन लोगों ने। they came up the नहीं, moment। बट ये अपने लीडर के प्रति लॉयल्टी भी दिखाता है, ये आपका इन्फ्लुएंस भी दिखाता है कि फौज में किस तरीके से आप अपने ट्रुप्स को या जवान को इन्फ्लुएंस और मोटिव इंस्पायर कर सकते हो काम करने के लिए, मतलब जान देने के लिए। सर बिल्कुल। सो बाय टाइम दीज पीपल दे केम अप, तो मैं सिचुएशन असेस कर रखी थी। I ordered my JCO and the team members to immediately occupy the positions अपनी, so that Pakistanis they should not come and counter attack. We should have to gather the all the strength. तो सब occupy करके once everything got under control, और then I reported to my commanding officer कि sir mission accomplished, position occupied, Rajrif ने जो orders दिए थे आगे वहाँ हो गए हैं, everything is okay. And this small thing also to report. My CO said, okay, what is that? No, sir, I entered a minefield, or I lost my right leg. He said, why are you telling me all these things now? I said, sir, job is first, mission is first. That's done. Okay, this is, I'm all right now. He says, what is the level of damage? I said, below knee, leg is gone, right leg. Immediately evacuate and this and that. नेचुरली लाइक उनका एक कमांडिंग ऑफिसर एक अगर ऑफिसर को ऐसे चोट लग जाए तो उस कंडीशन के अंदर, बिकॉज वी हैड वेरी स्कैटर्ड स्ट्रेंथ, तो वी कुड नॉट यूज टू अफोर्ड टू लूज आवर मेन, एंड इतनी हैवी कैजुअलिटीज हो रही थी। सो आई कुड अंडरस्टैंड हिज एंगर, सो सेड कि इमीडिएटली कम डाउन। तो थैंक टू माय दोज ब्रेव बॉयज, रास्ता था नहीं कैसे लेकर आए, तो 3-4 लोग, एक किसी ने हाथ कंधे पे लिया, किसी ने एक पैर उठाया, एंड सर फर्स्ट द पेन किलर इंजेक्शन 7-8 घंटे बाद में नीचे जाके मिल पाया। एंड मॉर्निंग 8 o'clock 7:30 8 o'clock जाके नीचे द्रास के उस बेस नीचे जो एक बंकर में बना रखा था हमने हमारा MI रूम, वहां पर पहुंचे। एंड आई स्टिल रिमेम्बर द मोमेंट आई रीच देयर, तो वहाँ मेरे एडजुटेंट मेजर अजीत सिंह और बाकी RMO वो पहुंचे। दे सेड कि हाउ आर यू? मैं बोला सर बहुत भूख लग रही है। क्या खाना नहीं खाया था सर, बहुत दिनों से खाना नहीं खाया, भूख लगी है। डॉक्टर बोला यू कैन नॉट अफोर्ड टू ईट नाउ, बिकॉज इतने दिनों से तुमने कुछ खाया नहीं है, अगर तुम खाओगे तो और बुरा हाल हो जाएगा। तो he said what next? I asked my adjutant, he was my senior subaltern also. तो सर मैं बास्केटबॉल कैसे खेलूंगा? इसलिए लड़ाई चल रही है, तो टॉकिंग अबाउट बास्केटबॉल। So I somehow survived back. Then the medical assistant and doctor they came, they said कि ऐसा कीजिए, अपना मुंह इस तरफ कर लीजिए, because we are not going to do the dressing, because otherwise इसमें काफी वो गैंग्रीन हो जाएगा एंड इन्फेक्शन हो जाएगा पैर, तो आप इधर कर लीजिए। मैं पूछा कि क्यों मैं उधर मुंह कर लूँ? इसलिए कि हम पैरों की पट्टी उतारेंगे तो आप देख नहीं पाओगे उसको। आई सेड प्लीज गो अहेड, जो पट्टी आप उतारने वाले हो मैंने खुद अपने हाथ से बांधी है, डोंट वरी अबाउट दैट, आई जस्ट वांट टू सी इन व्हाट कंडीशन द लेग इज राइट नाउ। तो उन्होंने थोड़ा बहुत वो
ड्रेसिंग किया, दोबारा पट्टी लगाया. मीनवाइल दे रिक्वेस्टेड फॉर ए कैजुएक एंड वहां से कैजुअलिटी वैक करते. देन hats off to the doctors, those who actually operated me in the tents में सर field ambulance बना के, वो field hospital बना के घुमरी में they dropped me at घुमरी. मेरे battalion they had sent me to care of श्रीनगर base hospital, वहां जाना था, लेकिन इतनी casualties आ रही थी जा रही थी कि they dropped me at घुमरी. battalion ने सोचा मैं श्रीनगर में हूँ और but I was totally unconscious, तो मुझे पता नहीं था. बाद में मुझे मालूम चला कि I was further operated in tents और बड़ा अच्छा ऑपरेशन, लाइफ सेविंग सर्जरी उन्होंने की. एक दिन के बाद पता लगा when they declared the officer missing. तो मिसिंग कहाँ से कि भाई जाना था श्रीनगर में बेस हॉस्पिटल, they are waiting for the officer has not reached. फिर तलाशी अभियान जारी हुआ, पता लगा कि वो घुमरी में डॉक्टर्स ने ऑपरेट कर दिया. अगले दिन जाके I was shifted from there to base hospital. What a courageous move, what a courageous move. Viewers, मैं यहाँ ये एक चीज ये बताना चाहूंगा कि दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि कैप्टन सांगवान ने अपनी लेग पूरा इंजर और पूरा लॉस होने के बावजूद भी पहले उन्होंने अपनी मिशन कंप्लीट की, और मिशन कंप्लीट करने के बाद में उन्होंने अपने सीईओ को ये बताया, और उसमें भी उन्होंने ये बोला कि एक छोटी सी बात और है सर कि मेरी लेग चली गई है. मतलब उसको इतने शांति तरीके से उन्होंने इस बात को लिया कि मेरी लेग लॉस हो गया है कि छोटी सी बात है. और फिर उसके बाद आपने देखा कि जब उन्होंने ट्रीटमेंट के लिए किया तो नर्सिंग असिस्टेंट को बोला कि मैंने ही तो इसकी पहले पट्टी बांधी है तो मुझे देखने में कोई डर नहीं है. एंड आप देख लीजिए कि ये इसको करेज कहते हैं, इसको ब्रेवरी कहते हैं. दिस इज व्हाट इंडियन आर्मी इज मेड ऑफ, एंड दैट इज वेयर आवर warrior Captain Sangwan is there. Hats off, Captain Sangwan. So nice to hear all these words, and it will be so much inspiration to the people who are listening to you right now. Thank you so much. Yeah, and another point, you were worried that how you will play the basketball, and so natural. The person who is a sportsman, who is a national level sportsman, he always would worried about that. So then after that, how did you normalize your life? Because इतना सब कुछ होने के बाद, the life after this whole operation and whole incident, and you have been means achieving whatever you wanted in the whether athletics or the sports. We would like to hear, or rather my viewers would like to hear that also, so that become inspiration. कि आजकल क्या होता है, especially this program is for those mid-career professionals, that how to unhook your past and win life like a warrior. क्या होता है कि आज के जमाने में जो मिड कैरियर प्रोफेशनल बिटवीन 30 to 50 छोटी छोटी चीजों में उलझ के रह जाते हैं और उसके पीछे अपनी पूरी जिंदगी को सोचते खत्म होगी. And here is an example कि despite everything and how you recover and then become a world level personality. Captain Sangwan. But thank you so much, sir. In fact, हर किसी के जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं. And this was जिंदगी उसी का नाम है. जिंदगी उसी का नाम है. And this was a moment when जिंदगी में एक ऐसा ये मौका आया कि but till now till 29th of June I was fully able and fighting commando, and suddenly now my life has changed in a manner which I could not even foresee कि how the life is going to be. कि now walking with an artificial leg, what is an artificial leg, how people they walk. I had hundreds and hundreds of questions in my mind. Actually, when I was recuperating in base hospital Delhi here. And then comes कि I lost my confidence in the sense of mobility. So जैसे एक छोटा बच्चा पैदा होता है हमारे घर में, और वो आने के बाद में जब पहले कदम रखता है, पहले बार उठ के या घुटने के बल चलता है, तो हम बड़ा एंजॉय करते हैं. जो पहला कदम चलता है तो बड़ा एंजॉय करते हैं, दौड़ता है तो एंजॉय करते हैं. तो आई काइंड ऑफ once again relived my life. Yes. When I was on a bed. जब बेड से जब मैं व्हील चेयर पे आया, and first time when my wife she was there along with me, but रात को जब I had to go to washroom, first time जब मैं बिस्तर से उठ के व्हील चेयर पे आया and I just reached my washroom, that was the
was a moment of thrill for me कि yes, I am mobile. मैं चल सकता हूँ, मैं move कर सकता हूँ. Thereafter, wheelchair के बाद में I got crutches. पैर तो लगा नहीं था, पर crutches पे चलना शुरू किया. तो सच कहूँ आप सबके साथ में कि अभी तक जो एक नॉर्मल इमेज कि बैसाखी के सहारे चलने वाले का एक बड़े दयनीय सी, दर्दनाक सी और ना पैथेटिक और पुअर थिंग, ऐसी इमेज हमारे मन में, मेरे पर्टिकुलर मन में होती थी कभी, यार क्या जिंदगी है, बैसाखी के सहारे चल रहा है ये वो. बट दैट डे व्हेन आई टुक द क्रचेस एंड व्हेन आई स्टार्टेड मूविंग, दैट वाज अ फीलिंग, दैट अ डे ऑफ जॉय फॉर मी कि यस, आई एम मोबाइल, मैं चल सकता हूँ. Yes. And from then, when I got my artificial leg at ALC Pune, so that was the day I said कि अरे मैं तो दोनों पैर पे चल सकता हूँ. Oh, everything is perfectly all right, and all my fears were actually shattered the day when I entered the artificial limb center. और बड़े बड़े अक्षरों में वहां लिखा हुआ है, I complained of not having one leg till I saw someone not having both. Oh. Entrance पे लिखा हुआ है ऐसा. And actually it happened, sir. जब बैसाखी के सारे एम्बुलेंस से उतर के हम ALC के अंदर गए, पेड़ के सहारे वार्ड के आसपास में सब बंदे बैठे हैं, किसी के 2 हाथ नहीं है, किसी के 2 पैर नहीं है, किसी का 1 आंख नहीं है, ये नहीं है. And when all our warriors there in our army, yes, all warriors, many of the veterans, जब उनको देखा, and many of them walking with the prosthetic legs and all them, उस दिन तो बिल्कुल दिमाग से सारे के सारे शक सवाल दूर हो गए, सारे fear खत्म, सारे fear खत्म. अरे they can do it, I can do it. Yes, no problem. Yes, yes. So that was the time I regained my confidence back in life. I got my prosthetic leg, I started walking, I started running, and ऐसा दौड़ना शुरू किया कि कभी जिंदगी में रुके नहीं फिर उसके बाद. I know. And that's how, like, I once again, being a sports person, being a commando and are from army background, मुझे जानकारी मिला कि न सिर्फ एबल बॉडीड के गेम होते हैं, बट पैरा गेम्स भी होते हैं, पैरा एथलेटिक्स भी होते हैं, पैरा बैटिंग. तो उन दिनों, आज से 15 साल पहले की बात है करीब ना, तो उस समय जानकारी मिली. तो आई सेड कि अरे वाह, मैं तो बड़ा फिजिकली फिट हूँ. तो आई वाज गुड इन रनिंग एंड ऑल दोस थिंग्स. सो ट्रायल्स हुए, आई वाज पोस्टेड इन गुजरात, तो वहां पर इन ONGC, देयर आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि नेशनल गेम्स कहीं बैंगलोर में कहीं हो रहे थे, तो आई गॉट सेलेक्टेड एंड टू रिप्रेजेंट देयर इन द नेशनल गेम्स. एंड टू माय सरप्राइज, what was the event? it was I think 3rd national para athletic games in Kantirva Stadium, Bangalore. So that was what were the events? Events athletics में थे, and I participated only in one event in 100-meter race. And so viewers, आप देखिए कि prosthetic lab से he participated 100-meter and he was the gold medalist in that. Yes. So then I said कि yes, this para athletics, और इसके अंदर, because everybody is like of the similar nature, and हर किसी की अपनी अपनी disability, and everybody is a role model in their different places. तो उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, how to come back in life. I learned a lot from them, because I was a kind of a person wearing prosthetic leg due to a recent injury, that too in Kargil War. I was at a very hype when this thing happened. Many of them, they were having since the childhood this kind of different nature of disabilities were there. तो उनकी अलग जिंदगी रही है. तो जो मैं टेबल के इस तरफ जिंदगी में आज तक देखता आया था 27-28 साल तक जिंदगी में, अब मैं टेबल के उस तरफ था, अब मैं उस तरफ की जिंदगी को महसूस कर रहा था, देख रहा था. एंड आई फाउंड दैट वाज वेरी वेरी वंडरफुल. बहुत बहुत लाइवली, बहुत अच्छा था. तो and then thereafter I never looked back. Then I participated in the javelin throw mein. Then I got selected in the Indian team, went to Manchester, went to Belgium and different places. I won different gold medals, silver medal, bronze medal for the country and national, international level.
then the journey like never stopped. I kept Yeah. And then how did it happen then from this 100-meter event, then javelin event, where you represented Asian Games as well as your world champion. Then you entered into the badminton thereafter. So how that transition took place? Transition took place. We were in Malaysia participating in the games. So, and in those games, I was fortunate to be in the same contingent where Devinder Jhanjhadia, जो हमारे para जो Olympian हैं, and Madam Deepa Malik, she's the president of PCI. And so you were in the same period of time when Deepa Malik was there? Yes. We had she was one of my guest speaker on this. Yes. So Madam Deepa Malik and many of the elite athletes. So I've been part of the contingent. We have played together for a couple of years together. Okay. So, while running a race in Kuala Lumpur, Malaysia, my artificial leg broke down while running. Okay. I could not finish the race and all. Okay. So thereafter, when I came back, the doctors, they advised to stop doing the running, sprinting activities because we do not have that blade running and at that point of time. तो 2005-06 में वो ब्लेड्स नहीं थी तो जो प्रोस्थेटिक लेता उससे भागते थे तो डॉक्टर्स एडवाइज मी नॉट टू डू सो तो कुछ महीने के लिए शांत बैठ गए बट ठीक है फिटनेस मेंटेन करते थे तो देयर आफ्टर व्हाट हैपेंड इज हमारे ओएनजीसी कॉम्प्लेक्स में इंडोर बैडमिंटन गेम्स चल रहे थे एंड वो डबल्स का मैच चल रहे थे एंड माय डियर फ्रेंड्स वर देयर उनका एक पार्टनर वाज नॉट अवेलेबल तो दे वर ओनली 3 तो दे वांटेड टू कंप्लीट द फोर्थ पर्सन कोई आए खेल ले आई सेड कि भाई शुड आई ट्राई हाँ आ जाओ अच्छी बात है आई सेड कि भाई अगर ऊंच नीच हो जाए मुझे बताना मत कुछ कहना मत दे सेड फाइन so with them with all the able bodied because there was no physically challenged person or sports person there in that area, that location. So I started playing with them, all the young boys, young graduate trainees. With your prosthetic leg? I was with the prosthetic leg and they're all उनकी उम्र भी 26-27 साल 25 साल that young boys. और वो सट खेले और उनके साथ मुझे खेलने मजा आया तो I just said can I come tomorrow also? They said yes, why not? Please come and join us. And that's how I started enjoying the game badminton. Then I learned that okay, there is some para badminton championships also at national level. I participated in the para national, and to my surprise, in the first nationals itself, I got a gold medal. मुझे पता नहीं था कि मैं ये भी कर सकता हूँ ठीक भी करता हूँ because I never played with the disabled people. I played with all the very good top players in our company and all young players. तो उनके साथ खेलते खेलते मेरा गेम ठीक ठाक हो गया. Correct. So then thereafter I know I didn't look back. Then athletics badminton में खेलते I started enjoying that. So basically unless you subject yourself to something you don't realize your capabilities and that is what. So viewers just see that where from he started and where he reached. Just because of his focus and commitment, not only interest, just commitment to excel in the life. And that is what I call it, a winning life like a warrior. Whatever you do with the full commitment. Thereafter, Captain Sangwan, I am aware कि आपने ONGC में जाके फिर झंडे गाड़ दिए वहाँ तो आप mountaineer बन गए फिर जाके. And you made your team to climb the mountain Everest, and that is another commendable feat. So I think viewers would like to know that also. Right. So everything happens. जिंदगी में आपके लिए कोई रास्ता तय कर रखा होता है, but you have to actually walk through that. Yes. So I got transferred from Gujarat to Dehradun, and at Dehradun, as everyone knows कि Dehradun नीचे वैली में है, ऊपर मसूरी है, चारों तरफ अच्छे पहाड़ हैं. And there is a adventure club in our company, ONGC. So वहाँ छोटे मोटे आसपास में family trek and trekking के activities और adventure activities चलती रहती हैं. That fascinated me quite a lot. And since all the places are nearby, so we used to, on every weekend, we used to go for trekking along with the family, along with friends. So for 2 hours, 3 hours, 4 hours, and we started enjoying that. And one fine day, what happened is, देहरादून से मसूरी it takes around 10-12 किलोमीटर का we ट्रैक करके जाते हैं एंड वापस आते हैं लगभग 18-20 किलोमीटर करीब हो जाता है. तो अच्छा बारिश का मौसम था
एंड धुंध गिरी हुई थी, वहाँ 2-3 जगह है बीच में, तो चाय का सुबह सुबह मिल जाती है चाय पीने के लिए। तो उस दिन बारिश हो रही थी, कुछ दोस्त पहुंचे नहीं, तो हमने वहां से राजपुर से क्लाइंब करना स्टार्ट किया। आई थॉट कि बीच में दोस्त मिल जाएंगे, कोई नहीं मिला। तो जो बारलोगंज जो एक जगह बीच में आती है, वहां पर आई वाज सपोज टू हैव कप ऑफ टी देयर। तो झड़ी पानी एक जगह है, झड़ी पानी में वहाँ उस दिन मौसम ठीक नहीं था, चाय वाला था नहीं। आई सेड कि अभी इतना ऊपर चल के आए हैं, सुबह 5 बजे चल रहे हैं, तो चाय तो पीना बनता ही है। तो थोड़ा और ट्रैक करके ऊपर चले गए, बारलोगंज पहुंच गए, वहाँ जेपी होटल वगैरह वहाँ पर है। तो उस समय जिस समय गया तो वहाँ सुबह की दुकान वो बंद थी। और यार यहाँ तक आ गए हैं, और आगे चलते हैं, और ऊपर चला जाएगा। तो वहां से और स्टीप क्लाइंब करते करते वो शिव मूर्ति जो मसूरी है, मसूरी वहां पहुंचे, और वहां पर चाय की दुकान खुली थी। तो वहां जाके चाय पिया, एंड देन मीनवाइल एज यूजुअल घर में होता है, माय वाइफ शी कॉल्ड मी अप, तो कि भाई क्या बात है, कि इट्स टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, व्हाट टाइम यू गोइंग टू कम बैक, मौसम भी ठीक नहीं है। आई सेड कि मैं तो चाय पी रहा हूँ और पराठे भी खा रहा हूँ। कि क्या बात, कहाँ, वेयर आर यू? आई सेड आई एम एट मसूरी। तो शी गॉट वाइल्ड एट मी। नेचुरली। मसूरी जाना था, शुड हैव टोल्ड मी, हम इकट्ठे ड्राइव करके साथ में, अकेले अकेले कैसे गए हो, कार से गए हो, कैसे गए हो? आई सेड कि आई वेंट ट्रेकिंग। क्या? तो देहरादून से मसूरी ट्रेकिंग, वो भी अकेले बारिश में? हाँ, मैं चला गया ऊपर। So that gave me kind of confidence. वहाँ 2 कप चाय पिया, 1-2 आलू के पराठे खाए, and from Mussoorie I came trek down to देहरादून। वापस हाँ, सेम रूट से वापस आ गए, and I felt so happy that day कि यार ये तो बड़ा मजे की चीज है। Then we started exploring, going different places, and we got an opportunity 2015 that ONGC thought of celebrating the golden jubilee of और इंडियन माउंट एवरेस्ट फर्स्ट एक्सपीडिशन 1965 में गए थे। उसमें मेजर एचपीएस अहलुवालिया एंड मेनी ऑफ आवर आर्मी ऑफिसर्स वर देयर। तो 1965 में जब ये क्लाइम किया था, उसके 50 साल 2015 में पूरे हो रहे थे। तो वहाँ उस टाइम में ये प्लान था कि ओएनजीसी एक्सपीडिशन, ओएनजीसी टीम विल बी फॉर्म एंड दे विल गो टू द माउंट एवरेस्ट बेस कैंप। So then the team was selected, team was prepared based on your credentials and what you have done, what you achieved. I was fortunate to get shortlisted in 2-3 different phases and part of a contingent. So we were fortunate to go to Nepal, and Nepal में right now September October के महीने के बाद 2015 में, so we trekked down for 10 days 12 days from Lukla to Mount Everest base camp. Okay. So जब माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचे, so that was the time when actually just to share with the viewers, आखिरी जब 2 दिन जब आप ट्रैक कर रहे होते हैं, तो you cannot see the Mount Everest from the valley. To see the Mount Everest and all the other peaks, you have to climb another nearby small peak called Kala Pathar. Okay. So Kala Pathar is 2-3 hours climb. You have to go up there and stand there, yet then you have to see the Mount Everest from there. And all the different peaks, Lhotse and all the other peaks, and from there you see the sunrise behind the Mount Everest. So that was the thing. And to see the sunrise around 5:30, 6 o'clock sunrise hoga, so you have to wake up early in the morning around 12:30, 1 o'clock, and you have to start climbing at 2:30, 3 o'clock in the morning. आज कोई आप टॉर्च लगा के पहाड़ों में ऊपर क्लाइंब करेंगे in high altitude. Then you go and place yourself there. Then the right moment comes and you see the mountain. तो जब वहाँ ये देखा नजारा, तो it was so mesmerizing. Naturally. और so mesmerizing that बस मन से बस एक बात लगी कि आज तो सिर्फ बेस कैंप में सिर्फ ये चरण स्पर्श करके जा रहे हैं, मौका मिला तो माउंट एवरेस्ट पे भी कभी चलना होगा। Sure. That was a kind of feeling with all of us. So we came down, and later on our company, the management gave us an opportunity. They thought, why not to make a team of our own? Yes. And let's go to the Mount Everest. Okay. So then the actual expedition took place. The fight started. Actually, okay, कौन लोग हैं वो जाएंगे? Who will be those people who will be going to the Mount Everest?
that the selection has to be very, very tough. Why natural? So you have to be, हम कहते हैं कि I am fit. Okay, I am perfectly fit. I am mountain fit. But are you Mount Everest fit? Yes. So that level of fitness is required. And a circular and open notice was sent to all. And in that, out of around 30,000 total employees, around 500-600 people, they showed their interest. Okay. And then different layers of selection was done. When the first part was 5 kilometers run in 25 minutes. Oh. Like हमारा जो BPT, Yes. PPT. Yeah. PPT. 5 kilometers, 25 minutes में you have to qualify. Yeah. Now all the qualifying people, they were all young in 25 साल, 24 साल, 28 साल ये age थी. And I was around 40 years. I'm talking about 2016 के तो yes, I was around 40 years. तो अब उस उम्र में, and that too with a prosthetic leg. Yeah. So first time when I tried to actually run that, so I took the timing. It came around 60 minutes. 1 घंटे में 5 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ा. Oh. So I had 1 month time. और जब when I actually stopped running, so all my skin had torn off और पूरा खून वून आ गया था. So it was very bad condition of my leg. Still, वो मन में एक था मुझे कुछ करना है. Oh. Then after that, I trained hard. 1 हफ्ते तक I took out my prosthetic leg and waited and उसका repair किया पैर का सब ठीक से. And I participated and ran. And when the actual day came of the run, of the timing, Yeah. exact in 25 minutes, I Completed. completed with my prosthetic leg at age of 40 years. I still can't believe how I did it, but yes. Commendable. So I still remember it was in Kendriya Vidyalaya, Dehradun, on the 400 synthetic track. I was running. 5 kilometers was supposed to be done, and I finished in within 25 minutes. I felt so happy. Natural. So then around 200 people, 260 people, they were selected in that. And thereafter, shortlisting was done. And another phase 2 was tougher than the phase 1, actually. Dehradun, say Mussoorie, go to Bhadraj, and from there to reach Mussoorie at the cloud's end, that is 20 kilometers. So anybody in the selection process, anybody who was already a Mount Everester was the part of that? No, they were all normal ONGC employees, engineers, boys, girls, that's all. No, but in the selection process, I mean the guys who were selecting, means there was some veteran of the Mount Everester who were actually selecting you. So this entire exercise was conducted under the aegis of the Indian Mountaineering Foundation, IMF. Okay. The president of IMF, Colonel H.S. Chauhan, he was the overall mentor who planned all these level of screening and testing, fitness training. So they were there, and ONGC management, our sports department, head sports department, they were all there associated at the selection stages, and all our sports persons, they were there. Correct. So second phase was 20 kilometers mountain run, mountain trek, and in that total 42 could qualify in that, and I was very happy that in that my I think I was 13th or 15th in that when I could come in that run with a prosthetic leg, 20 kilometers uphill, mountains and all those things. So something like, and the age difference between me and my other colleagues was 10 years, 15 years, 20 years. Thereafter, different phases were there. We went for the adventure course, then basic mountaineering course, advanced mountaineering course, rock climbing, ice climbing, and all then expeditions. We went to Satopant, and every activity like we participated, and without any kind of a leniency from the ustads we did our training in Manali, and all the kind of techniques, and I was fortunate that in all the courses I scored alpha in the best gradings. So fantastic. So that's how, like, when we got qualified, so that moment, the last day when our results were to be announced, I was very happy that when the management decided a team of 12, so they gave me the responsibility to be the expedition leader of the Mount Everest mission. So
क्या बात है. And that was a great moment for me. And we were more lucky to have one climbing mentor with us. And climbing Okay. a mentor was none other than Shri Lavraj Singh Dharmshaktu, Assistant Commandant BS. And he is the highest record holder, highest Mount Everest summit in India. Okay. He has reached top on Mount Everest 8 times. Who is this gentleman? Navraj? Is Lavraj Singh Dharmshaktu. He is from Dehradun. And he's what appointment? He was doing what? He's assistant commandant in BSF. Oh, okay. So he was taken as a climbing team mentor. Okay. Because he knew each and everything about Everest. So under the leadership of our President Indian Mountaineering Foundation, Colonel H.S. Chauhan, he's a Maratha writer, excellent officer, excellent mountaineer. जो दुनिया में किसी ने नहीं किया, उन लोगों ने किया हुआ है 80s में. They went trans Himalayan expedition, अरुणाचल से लेके ऊपर लेह लद्दाख तक, वहां तक पहुंचे हैं वो. इतिहास में आज तक कभी नहीं किया जितना कर्नल चौहान ने किया. And with the leadership of the climbing leader, our Assistant Commandant Lavraj Singh Dharmshaktu, I was the expedition leader, and all young boys and 3 girls were there with us on the team. Oh, fantastic. So, they're like, yes, sir, yes. Nice. So awesome. And I think that must be your highest point of your life, in fact, with all these journey which you had. It is a culmination of entire your proving that yes, a person, if he says I can, means he can do anything in the life, Absolutely. So and this all the credit actually goes to my parents, my gurus, my teachers, my instructors, my academy instructors, my battalion senior officers, those who groomed me in this fashion, and my ONGC officers, the seniors, colleagues, those who had confidence in me. And just to share with your viewers that all these achievements after joining ONGC, whether in sports or mountaineering, all these things, it was not at the cost of my professional life. Yeah, absolutely. वहां पर कहीं कोई ढिलाई नहीं है, काम आपको पूरा करना पड़ेगा. इफ यू आर गोइंग फॉर ट्रेकिंग, माउंटेनियरिंग, हम सुबह 4 बजे उठ के जाएंगे, 3, 4, 5 घंटे ट्रेकिंग करके आएंगे. 9:30 I used to be in my office. So as I already said, Captain Sangwan, how you do anything, how you do everything, means if you are committed at your profession, you are committed in your passion also. So you rightly, wonderfully said. So, Captain Sangwan, just last thing you should tell to our viewers, one thing which they should do in their life. What is the one advice you would like to give our viewers so that they also win life like a warrior? They don't get bogged down by a small things in the life. Okay, the whatever I have learned in life and whatever I would like, I share with my colleagues or everyone is that be positive and be original. Be you. Be you, exactly. Yeah. आपको किसी को कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है. Yeah. आप अपने मन से, and you have to satisfy only one person, that is you. Yes. जब तक आप अपने मन से वो satisfaction नहीं करेंगे, क्या मैंने ये काम ठीक से किया? If I am satisfied, that means people will get satisfied. Yes. And जो मिला, be always grateful. Be always be grateful that पूरे आसपास धरती कायनात, everyone is there to support you. Yeah. Nobody is against you. आप एक कदम चलाओगे, 2 कदम आपके साथ में लोग आगे बढ़ेंगे. Universe will always help you. Universe will always. It has personally, I have seen, it has actually helped me a lot. Yes. And it has actually helped me a lot, and this has been throughout along with my life journey, whatever I have learned so far. No doubt. I fully subscribe to your views, and that if you take action, the universe will conspire to achieve that aims or the goals of your life.
True. So any last dream, Captain Sangwan, in your mind, anything which you still looking forward to achieve in your life? Not one, many. अभी तो कुछ किया ही नहीं है. I've That's just the become spirit. That's the spirit of a Fauji. अभी तो कुछ किया ही नहीं है. अभी तो बहुत कुछ करना है. I had to do skydiving. I had to go for a deep sea diving, scuba diving करनी है मुझे. And I have to explore the world. जब भी जितना मुझे मौका मिलेगा, पहले हिंदुस्तान सब पूरा देखना है, पूरी दुनिया मुझे देखनी है, हजारों लोगों से मिलना है, बहुत कुछ सीखना है मुझको अपना. And I just want to remain healthy so that आखिरी दिन, जिस दिन मैं इस धरती से अगली जगह जाऊं, हंसते खेलते ऐसे के ऐसे गुजर जाऊं, किसी को मुझे भी ना पता लगे, किसी को पता ना चले कि Wonderful, wonderful. Captain Sangwan is really so inspiring, and your last word, कि अभी तो बहुत कुछ करना है, एक ही जिंदगी है, उसमें बहुत अचीव करना है. And you talked about the scuba diving. I have interviewed one lady, Archana. She's naval officer wife. She's a scuba diver. She's a instructor, and she runs this academy in Noida. Okay. So I can connect you with that lady. So that way you can find the way out that how to become a scuba diver also. So this will be kind of a return gift from your side to me. I will introduce me for scuba diving. I will certainly connect you with that lady, because I have interviewed her, and she again started as a nothing to everything now. Okay, means, great. Means she told me that she never used to walk even 100 meters, and she has done everything now. She is scuba diver. She is even that base jumper. She has become a base jumper also. Not only skydiving, the base jumper. So, and only woman in India. That is So I'll connect. So Captain Sangwan, thank you so much. It's such a inspiring talk, and I'm sure my viewer must have really had a tons of inspiration and tons of values added to their life. And I'm privileged that I got an opportunity to talk to you. Same here, sir. Thank you so much. And thanks to all your channel viewers that through you, I'm able to share few of my experiences in life. And I'm sure कहीं ना कहीं अगर थोड़ा भी किसी को टच किया हो तो definitely I made my day. And thank you so much for inviting me, sir. Right, sir. Thank you so much.